So just take 30 seconds and just let me know. Can you just share from what did you get from the video? What is that you are seeing in your life? I just still I can't say that what is driving me. Hmm. Uh, but what I can say is like I'm still not really. I mean, these all needs are there, right? I don't know Hmm. which lens I'm using, but there is certainly all of them are there subsequently, but in a not in a positive matter. There is something negative matter is there in me, which is stopping me everything, whatever I'm doing, and is not giving me happiness. This is what I Okay. can say. That all those six basic needs are actually there are some needs are there, and I'm working according to that. But most of the times I'm very much, and that's why I'm not getting the ultimate happiness in whatever I'm doing. Okay. Got it. So you went through the video and you see that there are some emotions which are driving. And right now you don't know exactly what is driving you. Yes, I can't exactly tell that which, because there is some, if growth is there, even the love and connection is there, certainty is there, even contribution is there. I do all those things, but ultimately the happiness is not there. Okay. What I do, is everything is for happiness. All these basic needs are there to gain the happiness only, but Hmm. still they are not. Got it, Apish. What I see, what is driving me is the passion that I have actually had for the food industry. Basically, I'm very clear कि I need to contribute into the farmer's life in ensuring first that their soil is more fertile, because unfortunately over a decade of years they have been using these chemicals, and that is taking away the entire niche part of the soil, and that is impacting their revenue, their income. So that is something that is driving me. I feel ki, I must try and put into as many as people possible, create awareness about going towards organic farming and preserving the soil and increasing their revenue. At the same time, that is a basic raw material of my product. So if the input is right for my product, eventually my output is going to only get better and better. So I am trying to basically value add in the entire ecosystem, right from the farm to fork. Because Hmm. once the input is right, the output is right, the consumer is going to get an excellent product. Unfortunately, the sector that I am dealing in as of now is the most unorganized sector, and there is huge adulteration. And because the awareness levels are low, people are not bothered to understand these importance. They are just driven on, the decision is driven mainly on the price. And Okay. I think that is what is driving me on one side. On the other side, my life has been in two phases. One has been the corporate life for almost about 20 plus years, and in the last few years I have moved into business, out of which in the last 1.5 year I have moved into some training sort of. And my association is getting with more and more stronger people with greater mindset, and trying to work on people's life. So what I understand is how I can contribute into others people's life So in three four Abhijit, factors. Yeah. in your sharing, what I'm seeing is the emotion of contribution is that is what you are driven by, Yes, sir. right? True. Thank True. you. Yeah. Got it. Thank you, sir. I have Thank cut you this so much. short. Okay. Thank you. No problem, sir. Sure, sure, sure. Thank you Thank you so for much. sharing. Huh. I think I was operating from the perspective of safety, not safety, survival instinction. Okay. Survival. Survival instinction. I wanted to have basic needs securely, like roti kapda makan has to be fulfilled on priority. I Got think it. I was able to achieve it. After achieving that, now there is no drive for me to go to next level. Okay. Got it, Basavaraj. One way I achieved it. After that, there is no drive. So in Kannada they call it as Alpatrupti. Now I think I am facing that. Got it. Brilliant. Okay. Okay. I am see actually what I shared even on the group, that actually the perspective of growth is driving me, not even growth.
Yeah, perspective about growth. Brilliant. Yeah. Thank you. Thank you for sharing. So first of all, जो भी लेवल में आप लोग हो, whatever you saw or what you did not see, that's fine. जैसा अभी बसवराज जी ने बोला कि एक ड्राइव था, but now there is no drive. What Atish said is there are so many things he can actually see, but there is no happiness. कि हम लोग पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रहे हैं, एंड यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, यू आर ड्रिवन बाय, बट देयर इज नो सेटिस्फैक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वहां से बात करेंगे कि सी देयर आर 6 इमोशंस एंड लेट अस ग्राउंड इन ऑल दो 6 इमोशंस. वो कह रहा है Atish, you may see we had a call and there are so many emotions where you are stuck at this current situation, okay? And don't worry. So that is where you are right now, and it's not right, wrong, good, bad, kuch nahi hai. See, this is what is so. But looking at what is really needed for Atish, I am slightly moving away from what we were supposed to create and I am creating something else. Where this can be seen from you all. Again, this is based on the 6 lenses, but it is to the next level. I just want to come out from here, and you are all helping me. You are helping me for this. I think this is the great thing. I want to come out from this something of me, and I don't know how to come out. And Got if that. you can help me out, that is what my life is going to be. I mean, this is what my intention is actually. Yeah, I want to come out from this. Something is stucking me. I want to come out from that. brilliant. So one of the thing is, so let us look at हम लोग reality देखते कैसे हैं? How do we see reality in every area of our life? Let it be business, let it be relationship, let it be your career, let it be finance, anything. How do we look at reality? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ हम करते हैं, अभी बिजनेस करते हैं, रिलेशन करते हैं, तो हमें देना चाहिए. समथिंग लाइक ये शेतकरी जैसा करता है ना, कि वो पहला डालता है, तो उसके बाद वो ब्लॉसम होता है और खुशियां मिलती है. तो वी हैव टू गिव फर्स्ट एंड Yeah. देन इट विल मेक इट ग्रो आल्सो, एंड आफ्टर ग्रोइंग वी हैव टू एंजॉय द फ्रूट. तो Okay. एक धंधा में होते हैं, नहीं तो रिलेशन में होते हैं, So कुछ भी. I'm just stopping it, Atish. Okay. So be very clear on listening to the question. नहीं है तो हम लोग इधर उधर सब भटक जाएंगे. The question is how do we see reality? इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सर. हमें करना है, उसको अचीव अचीव करने तक हमें करना है. Got it? रियलिटी में कैसा होता है, इट नॉट बी इजी, बट इट नॉट बी डिफिकल्ट आल्सो. हमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा ही. रियलिटी इज लाइफ इज लिटिल बिट, आई मीन वी हैव टू डू संघर्ष. विदाउट संघर्ष यू कैनॉट गेट एनीथिंग. So again, now looking at what you spoke, reality is संघर्ष करना है, अचीव करना है तो करना है, लेकिन संघर्ष करने से ही हम लोग अचीव कर सकते हैं. Yes, sir. Is that the reality in life? I am not speaking to only Atish, okay? I am speaking to everybody. If anybody want to say anything, you can just unmute and you can speak. मेरे लिए अगर समझे एक्चुअली इनकम मैं चेक करना चाहता हूँ. आई विल लुक इनटू माय बैलेंस शीट एंड व्हाट आई अर्न. Okay? दैट इज माय रियलिटी फॉर अर्निंग. Okay, brilliant. So I am just now coming back to what Atish spoke. संघर्ष करना है तभी हम लोग को अचीवमेंट मिलेगा. इज दैट द रियलिटी? आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है. ब्रिलियंट. सो ये आपको ऐसा लगता है? यस. Am I right? यस सर.
ये आतिश को ऐसा लगता है कि संघर्ष करने से ही हम लोग कुछ कर सकते हैं. I am just नहीं है. going slow bit by bit. Yes, Basavaraj. No, you need not to be fight or struggle or strive. Only thing he has to uh, think smart, think out of the box, and stick to the plan. Brilliant. That is what So, will make him success, not the Sangarsh. brilliant. So there are two In my views opinion. right now in this meeting itself. एक बोलता है संघर्ष करना चाहिए तभी कुछ होएगा, तो बसवराज जी बोलते हैं कि नहीं, संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर हम लोग अकम्प्लिश कर सकते हैं. तो व्हाट इज रियल? विच वन इज रियल? किस चीज के लिए संघर्ष? देयर इज अ न्यू क्वेश्चन अगेन. संघर्ष करना भी है तो किस लिए करना है? सुभाष बोलता है कि मेरे को अगर मेरा बिजनेस का ग्रोथ देखना है तो मुझे मेरा बैलेंस शीट चेक करना है. Sir, I would like to add, from Yes. what I look at, whatever all the three participants are telling, it's all on the one line. It is eventually a defined process. Sangharsh karna is right. That's a way of achieving it. He is not backing away from it. He is prepared to take it, and his thought process is clear. Number two is जैसे बसवराज सर ने बोला कि संघर्ष करना नहीं है, और whatever it is संघर्ष, that's only a process of it. That is a part of it. Without an input, there is not going to be an output. So that Brilliant. is his intention of input. Subhash is telling ki, yes, I will look into the balance sheet. Balance sheet is the outcome of all the inputs that have gone across over a period of time. And like Dr. Saab said, ki kis liye karna hai? Because that is his motive. At the end of the life, he wants to get happiness in whatever he does. So that is all going to be derived. It is not one thing, but multiple inputs, and final output is going to be on a single line. This is how I will look at it. Yeah, Good. thank you. Thank you for sharing, Abhijit. So now Thank coming you, sir. back to everything, अगर हम लोग देखते हैं ना, there are so many stories just on a word called how do we see reality. आप लोगों ने जो कुछ भी शेयर किया वो सच्चाई है या नहीं है, मुझे खुद को मालूम नहीं है, एंड ऑफ कोर्स आपको भी मालूम नहीं है. एंड व्हाट वी क्रिएटेड हियर इज our version of what is reality. Story. A story onto everything. Relationship is not working, then there is a story behind that. The business is not working, then there is a story behind that. There was a drive and now there is no drive. Again, there is a story behind that. So are we really looking at what is the reality, or are we getting into a story called our version of reality? Atish, I am making this more real for you. Now you will have to really look at, there are negative thoughts in me which drives. Is that the real or your version of reality? It is real. I mean, emotions are driving me. Maybe they are positive or negative. I got that. Got that. Negative also driving me for good cause, or positive also bringing me to the positive thoughts also. Sometimes when I do all the things with a positive thought, it gives me some pain also. Got that. तो नहीं, मुझे इमोशन होकर जा रहे हैं सर. I am stopping it. So there are negative thoughts and they are running my life. Is that the reality, or it is your version of reality? No, is the reality मुझे लगता है. Yeah. So whatever is there already here, हमको ऐसा लगता है कि that's what is real. मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूं.
I am just making you to just introspect. Is that real? See, अभी मुझे बुखार है तो आई विल गो टू द डॉक्टर. मैं निखिल साहब के पास जाता हूँ. निखिल जी, आई एम नॉट वेल, आई हैव फीवर. व्हाट डू यू थिंक? डॉक्टर साहब Real क्या case है. बोलेंगे? तो वो 2-3 गोली लिख के दे देंगे क्या? चेक फर्स्ट. क्या ही चेक विल चेक करेंगे. फर्स्ट? वो क्या चेक कर रहे हैं? सही में टेम्परेचर बुखार कितना है क्या? है, कितना दिन से था, एंड मे बी ही विल ऑल्सो चेक आपने क्या खाया, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ था क्या. व्हाट इज दैट दे आर चेकिंग इज एग्जैक्टली द रियलिटी ऑफ फीवर. अगर है तो भी कितना है, एंड देन ही विल प्रिस्क्राइब व्हाट इज द मेडिसिन रिक्वायर्ड. See, last week ना I went to my native. Okay, my mother was admitted. मैंने डॉक्टर को बोला, सर जनवरी में हम लोग ने जब एडमिट किया था, these are the reports. I gave him all the reports. He said I got that, but I will have to do all the checking again. मैं बोला क्यों, अभी तो किया ना. बोलते सर अभी 2 महीना हो गया ना. We don't know how the body is responding. Then we did again all the checks. Okay, there were a lot of improvements and there were certain damages also for which he was supposed to give the medicines. डॉक्टर ने ये नहीं बोला अरे आपने 2 महीने से ये सब किया, कुछ नहीं हुआ, अभी कैसे करने का, ये ऐसे होने वाला है, ये बीमारी में ऐसे ही रहता है. कुछ नहीं. ही जस्ट सेड वी विल हैव टू डू द रीचेक अगेन. हम लोग ये 1 2 3 4 टेस्ट करेंगे. बेस्ड ऑन द रिपोर्ट वी विल डिसाइड द मेडिसिन. See, I am again penetrating to each one of you is because I don't know what is happening in your life. But at the same time, human beings are much more away from the reality in every area of your life. वो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप हो सकता है कि आपका बिजनेस हो सकता है आपका करियर हो, or anything whatever is happening. We are much more away from the reality. And it is not something wrong with me or Atish or Abhijit or Nikhil or Subhash. This is how we are being wired. We see things worse than what they are. We see things worse than what they are. See, अभी मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं, मेरा बिजनेस में ये साल में सिर्फ 1 लाख रुपए का, ये महीने में मेरा अगर सिर्फ 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या हुआ है? 1 लाख का प्रॉफिट. हाँ, 1 लाख रुपए का 1 लाख का प्रॉफिट. प्रॉफिट, दैट सिंपल. इज रियलिटी ना. Yeah. बट मैं कैसे सोचता हूँ, नहीं यार 1 ही लाख रुपए हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुआ, मेरा ये कस्टमर का भी लफड़ा हुआ, ये ऑर्डर मेरा हाथ से चला गया, दूसरा ऑर्डर में तो मेरे को प्रॉफिट ही नहीं मिला. सो इज दैट द रियलिटी, और we are putting our all imaginations to create a story called this is real for me? And definitely I am living in that world, and it becomes so real for me that I have no profit, or my business is not working, or my relationship is not working, because I have an imagination or a illusion called this is how life can be, or this is how life should be. मेरा रिलेशनशिप ऐसा ही रहना चाहिए, मेरा बिजनेस ऐसा ही होना चाहिए. And the moment it is not, then we start imagining and creating a world called ये रियल है हमारे लिए. So in how many areas of your life you are
looking at reality worse than what they are? I'm asking a question. Almost everywhere. Can you be specific, Nikhil? The performance of the stores in Yeah. opening. So what is the story there? What is the reality and what is the story you have? Reality, there is a sizable amount of business, Mm-hmm. but we feel कि वो कम है बहुत, Yeah. and you have to achieve more. Brilliant. So for me, the reality is we have fixed an X in our mind. Until we don't reach that X, we always are going to assume that it is lower than that. The minute it Brilliant. crosses that X, we will Yeah. think, oh, I have done it. So maybe that's an hypothetical figure in mind. But like you Possible. mentioned, reality, it is what it is, and we must go with what it is. As simple as Yeah, that. this is what it is. Fantastic. Yes, sir. Brilliant. Atish, Basavaraj, Subhash. For me, sir, reality is the plan that I have in the coming time, in the next, say, 7 months or 8 months. So, luckily, I'm trying to look at it from that perspective. Reality is, get to that level. All the hard work has already been done till now, and it is time to take this into the next level. So the Brilliant. drive is, putting that in place. That's it. हम लोग उधर तक भी नहीं जाएंगे. पहले let us ground on what is reality. Yes, X sir. is the Sure. target we have, and right now we have not reached X. That's a reality. But that is not that कि यार कुछ नहीं हो रहा है. Thank you for sharing, Abhijit. True. मेरे लिए है ना, हर प्रोजेक्ट है ना थोड़ा डिले हो जाता है. And I have a story that I am not a very good performer. Brilliant. तो आपका प्रोजेक्ट जैसे ही डिले होता है, हम लोग ये नहीं देख रहे कि बॉस ये क्यों डिले हो रहा है, or what else Yes. needs to be taken care so that next project will not be delayed. Get into a story called नहीं, I am not a performer. मुझे काम करने को नहीं आता. Yes. Brilliant, Subhash. Thank you for sharing. Yeah. Measure. Okay. 2018, when I moved from Bangalore to Gadag, I had a target of some X amount. Yeah. In 2023, I am earning 3x. But the target I achieved was in 2-3 years. Then same moment is not kept. Though I surpassed my target, I mean the some revenue part was a target for me, goal for me. I surpassed it close to 3x. Then now same speed I'm not. That is making me to think that I'm not doing good enough to I'm becoming a performer. Like that feeling I'm getting. Yeah. Got that, Basavaraj. Same rate of growth is not there, but that is making. But actually, the reality is that I'm 3x than I had myself a target. Brilliant. Thank you for sharing. So I'm just repeating, okay? There was some voice was not so clear, okay? Whatever I got, I'm just sharing. So what Basavaraj is saying is, X का कुछ target था और 3x हुआ है. But still, अभी उनको लगता है कि I'm not performing. Thank you for sharing, Basavaraj. Yes, Atish. 3x के बाद 3x के बाद स्टैग्नेट हो गया ऐसा लग रहा है. 3x, हाँ 3x के बाद में stagnant हो गया. There is no growth. मेरा रियलिटी ऐसा है कि मेरा व्यवसाय चल रहा है, वो ऊपर भी जाता है, थोड़ा सा नीचे भी आता है. मगर मैंने दुकान खोला तो हर दिन मेरे पास ग्राहक आते हैं, मेरे काम होते हैं, मेरे जेब में पैसे आने लगते हैं. मगर ऐसा लगता है कि बाबा ये सब करके भी मैं कम पड़ रहा हूँ. आई एम नॉट वो लेवल जो मैं पाना चाहता था वो नहीं कर रहा. तो ये मेरी स्टोरी है. तो रियलिटी है कि मैं दुकान खोला तो मेरा इनकम आता ही रहेगा.
एंड उससे ना मैं अपनी फैमिली बढ़िया अच्छी तरह से नहीं तो एक इससे चला सकता हूँ। मगर फिर भी वो मेरे जो ड्रीम्स है ना वो पूरे नहीं हो रहे, इसलिए दुख का पैदा हो रहा है, ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं। ब्रिलियंट। और जो सो रिश्ते है, हाँ बोलिए ना। रिश्ता भी जो है ना मैं बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहा हूँ क्या। जिन लोगों को समझ में आता वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, और जिनको ना वो मुझे लोग जो समझते नहीं है वो लोग मेरा एडवांटेज लेते हैं। ये भी मेरा एक स्टोरी हो सकता है, नहीं तो ये रियलिटी भी हुआ होगा। ये मैं आपसे बात करूंगा बाद में कि किस तरह से आप मुझे इसको हैंडल करने के लिए नहीं, बोलेंगे। अभी फिलहाल मैं उसमें मत जाओ। सो अच्छा। डोंट इवन गो देयर। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, कुछ लोग आपको समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते हैं। हाँ, जो समझते हैं उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत ही अच्छा बन रहा है नो सर। नो 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 नो, डोंट गो देयर। इज दैट द रियलिटी और इज दैट आपने बनाया हुआ इमेजिनेशन से? अभी एग्जाम्पल के लिए, मैं आपको समझता हूं, ये आपको कैसा पता चलेगा? जब आप मेरे डाउन्स जो रहते हैं ना उसको आप संभाल के मुझे जरा एक लेवल में लाके दे सकते हैं, तो इसका मतलब है ब्रिलियंट, कि आप मदद करते हैं। ब्रिलियंट। और So अभी is that the reality or a story you made it? ये रियलिटी होनी Sorry. चाहिए, क्योंकि आप मुझे हाँ, समझते हैं, क्योंकि आप मेरी मदद करना चाहते हैं। ब्रिलियंट। तो इसका मतलब यह है कि जो आपको मदद करेगा वो आपको समझता है। यस सर। तो समझता सुभाष है। आपको अगर मदद करेगा तो सुभाष आपको समझता है, निखिल आपको मदद करेगा तो निखिल आपको समझता है, कृष्णा अगर आपको मदद नहीं करेगा तो कृष्णा नहीं समझता है। ऐसा नहीं बोल सकता सर, आप मदद करें ना करें, मगर आप मेरा बुरा करें तो आप मुझे नहीं समझते हैं, उसका तो फायदा उठाते हैं तो आप मुझे नहीं समझते। गॉट इट। सो नाउ अगेन गेटिंग इनटू ईच वर्ड, अगर हम लोग डीप जाएंगे ना, एवरी वर्ड आप जो बात कर रहे हो ना उसके पीछे क्या क्या स्टोरीज है ना। सी आई वांटेड टू गिव यू फॉर राइटिंग, बट एक क्रिएट करने से पहले मैं आपको नहीं लिखवाना चाहता था। आज मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा, सो नाउ यू विल हैव टू सिट एंड राइट। ओके सर। हमारे जिंदगी में ना हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी ये सब लोग, आप लोग जितने भी अभी तक शेयर किया, सुभाष का बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है, कभी कभी प्रोजेक्ट डिले भी हो रहा है, बसवराज 3x कमाया, अभिजीत इज डूइंग नेक्स्ट लेवल, योर बिजनेस इज वर्किंग, मेनी थिंग्स आर वर्किंग फॉर आतिश, निखिल के लिए बहुत सारा परफॉर्मेंस है बिजनेस में, बट स्टिल देर आर स्टोरीज। और ये सब के पीछे आप लोग क्या मिस कर रहे हो? You are missing what is actually real. And you can't even enjoy. बसवराज ने 3x कमाया, but he can't enjoy that. अभी लगता है कि यार यार मेरा अभी ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। सुभाष ने 10 प्रोजेक्ट किया तो उसमें से 4 प्रोजेक्ट शायद डिले भी हो गए, लेकिन वो बाकी का जो 6 बनाया ना उसका कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है। आतिश का बिजनेस रोज चल रहा है, कस्टमर आ रहा है, पैसा आ रहा है, रिलेशनशिप भी बढ़ रहा है, एंड ही इज एक्सप्लोरिंग एंड ही इज एक्सपांडिंग, बट उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। वी आर जस्ट लुकिंग एट व्हाट इज नॉट देयर। और ये सिर्फ मेरा और आपका नहीं है, ये सब लोगों का प्रॉब्लम है। वी ऑलवेज लुक एट व्हाट इज नॉट करेक्ट और व्हाट इज नॉट राइट द वे वी थिंक। हम लोग को ऐसा लगता है कि लाइफ में ये ऐसा होना चाहिए, मेरा बिजनेस ऐसा होना चाहिए, मेरा रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, मेरा दुकान ऐसा चलना चाहिए, ये हम लोग को लगता है। और अगर वो ऐसा नहीं रहेगा, वी आर नेवर गोइंग टू बी हैप्पी। आप जो बोल रहे थे ना आतिश, बहुत सारी चीजें चल रही है, यू आर ड्रिवन बाय लॉट ऑफ थिंग्स बट यू आर नॉट हैप्पी, यस सर। बिकॉज हम लोग वो हैप्पीनेस तो ये क्रिएट करना पड़ता है। मैं वो गुड़ी पाड़वा के दिन ना एक मेरे को मैसेज आया था, आई एम जस्ट शेयरिंग। वो नीम का पेड़ जो है ना रास्ते में हर जगह पे मिलेगा, लेकिन गुड़ जो है वो बनाना पड़ता है। यू विल हैव टू मेक द जॉगरी। जागरी का पेड़ नहीं है लेकिन नीम का पेड़ मिल जाएगा। सो इन लाइफ इट इज लाइक दैट।
There are certain things already there. You can't do anything, but you can always create what is required for you. I was like so moved by अरे यार ये कितना अच्छा मैसेज डाला था ये लोग पाड़वा के लिए. See, our life itself is like this. What is not working हम लोग उसमें बहुत ज्यादा टाइम बिता देते हैं, जहां पे हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि what is actually working. आतिश, अगर आपका डेप्थ में आप देखोगे ना, बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे हैं आपके पास कि बहुत अच्छे भी है, आप उसके ऊपर नहीं सोच रहे हो. अरे जो काम नहीं हो रहा है उसके ऊपर बहुत कुछ सोच रहे हो आप. उधर भी क्यों नहीं हो रहा वो नहीं सोच रहे हो. उधर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं यार कृष्णा ने गड़बड़ किया, कृष्णा मेरे बारे में ऐसा सोचता है. अरे कृष्णा एक्चुअली कैसा ही आपको मालूम भी नहीं है. So there are only 3 minutes to move, okay? If anybody want to say anything, you can take 30 seconds because we don't want to extend this. So what is actually the reality? So you're asking me a question or you're just exploring it? I'm asking. Brilliant. The reality is, in my case, the reality is no doubt there is a good business. So But just how one second. So the moment you ask me a question, what I did was what? I What I checked did the was- reality. आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, आप क्या एक्सप्लोर कर रहे हो? कैन यू गेट? Correct. Yes, दैट yes, इज yes. रियलिटी. मैं इमेजिनेशन में जा सकता था ना, हाँ निखिल ने मेरे को ये पूछा तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ. मैं ये भी सोचता हूँ कि निखिल कुछ एक्सप्लोर कर रहा है. आई नीड नॉट हैव टू इवन थिंक. बट व्हाट आई डिड इज आई आस्क्ड. Correct. तो मैं बोलूंगा निखिल को कि निखिल वी विल स्पीक टुमारो. Then you will again immediately ask me at what time. So what you did is what? You are making it real. Yes. It's not like ठीक है कल बात कर लेंगे. I'm just taking you a small example. तो ऐसा हमारी जिंदगी में बहुत सारे जगह पे we are getting into the reality, but we are not even present to that. And we have created our versions of reality. Krishna, I really moved by our version of reality. Yeah, I really touching me because I never saw reality as my version of reality. yeah. Brilliant. If I Thank you look for at sharing, the Shiva. various, yeah, तो ये अभी कॉल खत्म होने वाला है. So what I would suggest is you all can share in the group, WhatsApp group, or maybe you can make a small videos and share it in the group so that it becomes real. To inspire ourselves to do more. Like 3x हो गया अभी मुझे है ना शांति से रह के 10x करना है. So we will Without create feeling. that. We will create that. Okay. तो उसमें क्या करने का ना, you will have to fix क्या बोलते हैं उसको, 20% कोच का करके हम लोग को एक अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा. So that मैं आपको Okay. पीछे लगूंगा आगे बढ़ने के लिए. Because you will have to pay me Sure. fees. Yeah. Jokes apart. No problem. So we will have Yeah. to create the goals. हम लोग करते हैं वो. Okay. 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 So No issue. thank you everyone. So अभी ये any moment में cut हो जाएगा. So we will come Thank back and you. I am expecting your sharings in the group. No.